Hello and welcome to a brand new episode of HOPStart. I might be outside right now, but we've got two amazing shoots for you inside the studio. In the beginning, I'm going to be interviewing someone from Red. Now, what is Red? It's something to do with UX, but you have to stay tuned to find out. Bhavya, meanwhile, is also going to be interviewing someone from the rap scene. So if you definitely are a Gully Boy fan or any kind of hip-hop fan, you'll definitely stay tuned. Hi, I'm Sharan. I'm the CEO and founder of Red Experience Design. Hi Sharon, thank you so much for coming out to our studio and telling us more about UX design. So, What is Red? Let's start with what is Red. Okay. So Red is a user experience design firm. We are about 15 people strong, and we are based in Bangalore. And we are actually one of India's first UX only firms. Okay. So unlike typically what happens is what used to happen was a marketing firm which has a graphic design team would also end up doing UX, or a software company would actually build a graphic design team and become a UX team. We were one of the first few that actually was focused on building a pure user experience design firm. But that's interesting. So do you think that just branding yourself as a UX only team, as specialists, does that help in how do customers trust you more because you have a specialization? I think it's a specialization that deserves a separate name. It has its roots in marketing, it has its roots in branding and software. But today, I think it's evolved to a place where it's gone beyond. So it helps in defining what user experience literally is. So it's the organizing of all the touch points of a company with its customers in such a way that you are delivering the most simple, seamless experience possible to the customer. I agree, because I think apps now differentiate themselves on UX, right? Because it's about, you have such similar apps, and then it's usually about, hey, is it easiest for the user? So what are some of the tips that you like to sell to companies in terms of, hey, this is why we can make your user experience the best? The ways in which we can make their user experience best. Okay, so we, because we took a very focused approach in UX, what we ended up doing is learn deeply about this particular subject and what drives users. So it's not just the psychology of the user, it's not just about how it portrays, but also about how it feels and behaves. So we've gone beyond just doing digital experiences, so designing how a mobile app or anything works. We also worry about how physical systems work. For example, one of our clients, Cloud9 Hospitals, we had to actually do their redesign their queuing management within the hospital in order to deliver better experience on the app. So it's a strange thing, but we have to get out of the corners of the edges of the screen and go beyond it and do because stuff. UX would require you to not only understand the psychology of the user, but also inbuilt it into the app. So it's almost like you're handling it from machine end as well as the human end, right? But absolutely. So, for example, if let's say said company approaches you, what are the kind of services that you can provide them? So we do. So UX is an umbrella term for a lot of things like graphic design, user interface design, as well as another thing called UX, which is got to do with interactions. And we get into we get into also service design. So we worry about how those queues, like I was talking about, how those queues are formed, and also, like, let's say you're an e-commerce company, right? So it doesn't matter if you've just got the process of ordering your product right. What if you got a shabby looking box at home delivered to you? You'd feel really crappy about it. Yeah. So we get into how the package also needs to be designed. Okay, interesting. Yeah. So with a client recently that we worked with, a company called Crossbeats. So we did the end-to-end. So not just from placing the order online, but also how the box should be designed. What should how the unboxing of the box be? Yeah. This is one big thing nowadays, right? A lot of unboxing videos everywhere. This is so we got to focus on how consumers are buying stuff today. It's an experience that they're buying. It's not
no longer just about the product. So you actually talked about like, a lot in terms of outside the machine, right? Yeah. You do a lot of work from outside the machine. But so then I've got to ask you, is the makeup of your company primarily engineers or graphic designers? That's a very it's a broad question because we used to hire designers mainly before, but of late what we've been doing is hiring anybody with good analytical mind. Okay. So and we've gone. One of our previous hires was a chemical engineer first, and we've had architects. Though architecture is a field of design, but still it's something else, So we have people coming from everywhere, and me myself, I fell into design. I wasn't educated in it. Okay. So yeah. So but are you an engineer? So I started off as a software developer, and then I went to school for a bachelor's in business. Okay. But I do design today, so that's me. So you do have a business background, because I want to ask you, because before the interview and before the camera started rolling, you talked about how you started just as freelancing. You were almost forced to make this company because you got so many projects, right? Yeah. So does having a business acumen help in transitioning from that freelance to now a proper company? I think it does. I think any lessons that you've learned, anything that you let influence you, will influence you, and it's a good thing. You've got to bring everything to the table. Do you think it's a necessity, though? I don't know how to put it, because I started this company, or like I was saying, we started off first as I wanted to get more time on my hands. I wanted to literally have the 4-hour work week. That was my goal. Right now, it's nowhere close to that happening. But I liked what I was doing. So one of our first projects was with Urban Ladder. Okay. So I worked with Rajiv Srivatsa at Urban Ladder. They were a smaller company then. So the way I like kind of telling the story is when I used to work with them, we used to be able to park our car right in front of the building. So as they started growing, I had to go to the next street and park over there instead. But the thing was that that inspired me. I mean, I learned so much during that project, and I wanted to work more on these kind of projects. So I teamed up with a buddy of mine. We freelanced together. Then, out of necessity, we had to slowly build a team. Okay. So it was really out of a need that we built a company. So I get that there is a need, and the reason I think I asked whether business acumen helps is because a lot of viewers on our show are budding entrepreneurs or young students who have great ideas. I think the question I think I was getting at mainly was, do you think that you need a somewhat business understanding through education to be a successful entrepreneur? Or do you think that work X is where it's at? See, the danger of saying that you need this in order to do this, I think makes people believe that only these people can do this. I want to be the example of somebody who doesn't have that background is doing this. So I call myself a non-designer doing design. That's literally how I would like to say it. So you can learn whatever you want to learn. And as long as you've got a analytical mind which is analyzing and understanding what you're doing, and philosophy driving you, I think you'll be able to succeed. Okay, just coming back to that UX a little bit, because I'm also very, very excited by the development of UX, especially because I think that the difference in entrepreneurs now being able to have an app that is easily accessible to all is something that they can just hire a UX firm to create. So are primarily your customers individuals who are entrepreneurs, small companies, or do you go after, let's say, the big behemoths of the industry? So we used to work with the smaller startups before, and that was my thing. And we have a lot more. And the reason I used to like working with those kind of startups is because you have a direct interface with the founders of the company. And that's very important to getting design right. Because my job, if you think about it, is to translate what's in the mind of these entrepreneurs, the vision, into the form of an application or a process. So that's really what I'm doing, what I'm bringing to the table. So when you're working with a smaller company, you have that direct relationship. The larger you go, you're talking to somebody who talks to somebody in order to understand somebody else's vision. So that's quite literally how it goes. Fair enough. Thank you so much. Thanks so much for this thing. Right before we leave, will ask if there's any advice that you'd like to give to any young entrepreneurs who want to get into UX. I think if you have the desire, you should get into it. And there's a lot to learn, but get in there and start
doing it. I think that's what I would say. Thank you so much. Yeah. Stay tuned because after the break we have Bhavya also interviewing someone from the field of rapping. 2, 1. मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है। मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और अभी मेरे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है आज के जमाने का नंबर 1 रैपर जिसका नाम है बादशाह। तालियां! मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है आज के जमाने के बहुत ही खतरनाक यूट्यूबर जिनके वीडियो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत वायरल हो रहे हैं। सो उनके ग्रुप का नाम है राउंड टू हेल। तालियां! हेलो गाइस, मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स। आई एम अ रेडियो जॉकी एंड अ यूट्यूबर। So Raj, radio jockey, YouTuber, I mean what else? बस ये वो टैलेंट, बाकी और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपना। Okay. And how did it all start? यार रेडियो मतलब लाइफ में ऐसा आया क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था। सो आई फेल्ड इन 9th क्लास रेडियो के चक्कर में। सो तब मैंने सोचा कि अब मैं रेडियो में करियर बनाऊंगा। देन आई स्टार्टेड 12th के बाद रेडियो कोर्स करा। मतलब आपको पता ही है दिल्ली में कि कोर्स के पैसे चले जाते लेकिन इतना सीख नहीं पाते। हालांकि 40 to 50% मैंने उससे सीखा। फिर देन रेडियो में बहुत कई सालों तक इंटर्नशिप की। फिर टोटल मैंने आई थिंक मोर देन 8 years आई वर्क विद रेडियो एंड उसके बाद फिर यूट्यूब स्टार्ट हुआ। Wow. So how did the idea of YouTube आपको आया कैसे एकदम से? यार इंटर्नशिप कर रहे थे तो ऑफिस में ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते थे इंटरव्यू के लिए। Okay. तो कभी कभार ऐसा होता था कि रेडियो जॉकी नहीं होता था तो हम लोग इंटरव्यूज कर लेते थे। तो हमारा पहले मेन काम होता है कि सेलिब्रिटी का पिक्चर क्लिक करवाना क्योंकि टीवी पे देखता है एक होता है। Absolutely, सब करते हैं ये। हाँ, सबको फैन मूवमेंट होता था। ऐसे फोटो खिंचवाते थे। तो एक दिन मैं गया हुआ था इंटरव्यू करने बादशाह भाई का एंड रफ्तार भाई का। सो मैंने इंटरव्यू करा और ऐसे ही रखा हुआ था। उसके 4-5 महीने बाद मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया रैंडमली ऐसे ही। मैंने चलो कुछ करते हैं आज नया। उसके मैंने 4-5 महीने बाद देखा उसमें तो अच्छे व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर बढ़ गए और लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अब चालू कर देना चाहिए। करेक्ट। एंड ऑल्सो मतलब बिकॉज आप ये हिप हॉप का जो रैपर्स हैं उनको आप इंटरव्यू करते हो तो डेडिकेटेडली कोई कंटेंट इस पे नहीं कर रहा। तो इसके बारे में इफ यू वांट टू टॉक अबाउट। सो देखो इंडिया में क्या आई एम द ओनली गाय जिसको मैं खुद को बोलता हूँ हिप हॉप जर्नलिस्ट जो सारे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हिप हॉप की तरफ कोई नहीं है। करेक्ट। सो मैं खुद मतलब मुझे रैपर बनना था बट सही टाइम में मुझे पता लग गया मैं बहुत वैक हूँ। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मतलब रैपर ना बनने से मैं इंटरव्यू करना चालू कर दूँ। और मैं हिप हॉप म्यूजिक बहुत सुनता था, मतलब बॉलीवुड सुनता था, फिर हिप हॉप बहुत सुनता था बाहर का। फिर जब इंडिया में चालू हुआ तो उस टाइम वो कर नहीं रहा था। तो आई जस्ट स्टार्टेड क्योंकि मैं फैन था। बादशाह भाई, हनी भाई, एक इंडिया का फर्स्ट हिप हॉप क्रू था जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हिप हॉप क्रू है जिसका नाम माफिया मुंडीर। इसमें हनी भाई, बादशाह भाई, रफ्तार भाई, इक्का, लिल गोलू और ये दिल्ली का था। तो मैं इनका फैन था, मैं इनको सुनता था। तो फिर मैंने इनको आई एम द ओनली गाय जिन्होंने इन सबको इंटरव्यू करा हुआ है। तो फिर ऐसे करते करते मैंने मुंबई, फिर अभी मैं देहरादून गया था, वहाँ पर मैं हिप हॉप रैपर्स का शूट करके आया। तो अभी मैं जितनी भी स्टेट्स है इंडिया में वहाँ सब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और हिप हॉप इंटरव्यूज कर रहा हूँ। Correct. Now I'm sure people like recognize because through your YouTube interviews and all, since you're the only one doing it. So how is like the response? यार अच्छा लगता है कभी मेट्रो में लोग पहचानते हैं, अरे भाई अब राज जोन सुना ऐसे पिक्चर क्लिक करा देते तो इट्स फील गुड। Fantastic. So since you have been interviewing these hip hop rappers, I'm sure you also have your personal favorite. Would you like to talk about that? यार माफिया मुंडीर इज माय ऑल टाइम फेवरेट। जितने भी हनी भाई, बादशाह भाई, रफ्तार भाई, इक्का एंड गोलू, मतलब जब भी मैं इनका इंटरव्यू करता हूँ ना तो कभी ऐसा होता नहीं कि सेलिब्रिटी बैठा है, इंटरव्यू बैठा है, दो भाई बैठे हैं। Correct. और मैं मतलब पहले ही इनके जब मैं जाता हूँ इंटरव्यू के लिए तो 1 घंटे पहले पहुँच जाते हैं, हम लोग चिल कर रहे होते हैं, फिर वही बातें इंटरव्यू में निकलती। Wow, fantastic. So one thing which I want to know because अभी एट प्रेजेंट बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव सीन गली बॉय और उसके बाद ये रैप सीन जो है इंडिया में बिल्कुल चेंज हो गया ना। पीपल आर सडनली टॉकिंग अबाउट इट सो मच। सो डू यू थिंक योर वर्क हैज आल्सो सॉर्ट ऑफ गॉटन हेल्प आफ्टर द मूवीज रिलीज? यार मतलब उससे पहले भी लोग कि रिलेट करते थे कि यार आपको भी होना चाहिए। वैसे मैं मूवी में हूँ एक शॉट के लिए। आई वाज ऑन द सेट ऑफ गली बॉय, 3-4 दिन वहाँ पर था। पूरी मैंने शूट देखी थी। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत मेरा है कंट्रीब्यूशन है क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे कोई था नहीं। और जितने भी मुझे ऐसे लोग जो मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे डीएम करते हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ना आपके इंटरव्यूज देख सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं अदर रैपर्स के, लेकिन ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है हिप हॉप का। शायद गली बॉय के बाद बहुत चेंज हुआ है। Wow, okay. So do you still like sometimes revisit your radio days and do you plan on ever going back to that? जाना है अभी क्योंकि लास्ट जो मैंने एज अ रेडियो जॉकी में जो शो कर रहा था वो मैं कर रहा था हिट 95 पे और वो था रेडियो का फर्स्ट एवर हिप हॉप शो।
Okay. सो इंडिया का फर्स्ट जो हिप हॉप पॉडकास्ट है वो भी मैंने किया, रेडियो पर हिप हॉप भी मैं लेके आया। तो अभी आई एम शिफ्टिंग टू मुंबई, तो वहाँ पर मेरा सीन ऐसा है कि अगर हिप हॉप मिलेगा रेडियो में तो मैं करूँगा, अदरवाइज यूट्यूबर सही हूँ। So you are very clear that this is the field you want to continue Yes, doing. क्योंकि कोई कर नहीं रहा और मुझे हिप हॉप को ना मतलब रेडियो पे प्रमोट करना है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जस्ट लाइक जब रैपर्स बॉलीवुड में सॉन्ग करते हैं तो वर्ल्ड वाइड हिट होता है। Correct. तो अगर मुझे लगता है कि रैपर्स को अगर मैं रेडियो पे लेकर आऊँगा या वो सॉन्ग्स अगर रेडियो प्ले होंगे तो और ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा। Wow, that's I think a incredible idea also to go forward with. हमारे बहुत सारे viewers हैं जो I'm sure have that passion for hip hop as you have spoken, you had since the start. But unfortunately because there's always this artistic pursuits की तरफ जो एक वो problems रहती हैं, the families are not as supportive, or sometimes you just feel what will be the career out of this. So ऐसे में what do you suggest to these people, these young kids who want to probably do something as you are doing right now? यार मैं ना उनके मॉम डैड को सबसे पहले बोलता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं गली बॉय देखने गया, मैं प्रीतमपुरा में देखने गया था, Right. तो वहाँ यूथ बहुत कम था, मतलब और जितने थे सारे पेरेंट्स आए हुए थे और वो सब सब देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मुझे बहुत सारे लोगों ने उसके बाद मैसेज भी करा कि मेरे मॉम डैड खुद बोलते हैं कि अगर तू सुनता है हिप हॉप, जो रैपर बना तो ठीक है। जब जैसे हमारे जो कल्चर उसमें बोलते हैं डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, टीचर बन, तो अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि ये तू रैपर बन, अगर तू हिप हॉप सुनता है तेरे को रैपर बनना है। और मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, इट्स योर पैशन, तुमको जो ही बनना चाहते हो, तुम्हें यू वांट टू बी अ बीट प्रोड्यूसर, यू वांट टू बी अ रैपर, तुम्हें कुछ भी बनना है करो। तो देखो तो माँ बाप से वो स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे कम माँ बाप होते, बहुत कूल होते थे, मेरे माँ बाप बहुत कूल थे, उनको पता है कि मैंने रेडियो करना तो ना अलाउ करा। तो मेरे को माँ बाप को समझना चाहिए, और अब ऐसा सीन आ रहा है कि लोग समझ रहे हैं, राइट, वो जो गैप है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। बट मैं फिर भी ये महसूस करती हूँ कि अभी भी राज वो एक प्रॉब्लम है इनिशियल कि क्या एवेन्यूज क्या है अगर इसमें परस्यू भी करता है एक इंसान, जैसे कि एक डॉक्टर जो है डॉक्टरी पढ़ के फिर डॉक्टर बनता है, पर इसमें एवेन्यूज क्या है? इज इट वेरी लिमिटेड, और डू यू थिंक कि नाउ द मूवी हैज कम आउट, पीपल हैव बिकम अवेयर, तो एवेन्यूज हिप हॉप में भी बड़े हैं? यार देखो स्कोप तो बहुत है, ठीक है, और मतलब जैसे बोलते हैं हम लोग अपने हिप हॉप कल्चर में कि रैप इज व्हाट यू डू, हिप हॉप व्हाट यू लिव। हिप हॉप आप जीते हो, आपकी लाइफस्टाइल है। करेक्ट, मतलब आप फेक स्टोरी नहीं सुना सकते। जो मेरा जैसे फॉर एग्जांपल हसल है, मैं अपने हसल की स्टोरी सुनाऊंगा, मैं ये नहीं सुनाऊंगा कि मेरे ब्लिंग ब्लिंग है, गर्ल्स हैं, लंबोर्गिनी है, तो वो बहुत व्हिच इज हम लोग एक्चुअली रैप में भी काफी नोटिस करते हैं। रैप भी क्योंकि वो रियल है, इट्स रियल, और मतलब कमर्शियल भी है, मतलब कमर्शियल भी करते हैं लोग उसको कि बेचने के लिए, अपने गानों के लिए। अगर मैं बेचने के लिए सॉन्ग बना रहा हूँ तो उसमें मैं बातें करूंगा वोट का कि ये सब बात करूंगा, लेकिन जो मेरी असली स्टोरी है कि मैं कहाँ से उठा, योर स्ट्रगल, दैट्स रियल, वो तो जरूरी है ही है। करेक्ट, तो मुझे लगता है कि जितने भी यूथ हैं, मतलब उनको ना, मतलब अगर इफ यू वांट टू बी रैपर, यू हैव टू बी रियल, और आपको अपनी स्टोरी बतानी है, चाहे कुछ भी हो। लड़ झगड़ कर माँ बाप से, मतलब देखो माँ बाप के साथ तो आपका 2 साल रिलेशन होता है, लड़ झगड़ के कभी ना कभी एंड में पैचअप होता ही है, तो उनसे लड़ झगड़ कर आपको फॉलो करो और जो करना चाहते हो वो करो, लगे रहो उसमें। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। Perfect. I think that was the perfect summation of this entire interview that we've had with you. Thank you so much. Thank you so told much. us so much about this field. I think मुझे तो बहुत मुझ जैसे लोगों को भी इस बारे में इतना अभी अंदाजा नहीं है। ये भी धीरे धीरे आ रहा है। Correct. It's just coming up right now. So thank you so much that you took time out and spoke with us. Thanks to you that you called me up for your show. Absolutely. Pleasure here. Thank you.